गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर फाइन एंड अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हो, है ना? स्टडीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. So, because in the circumstances when you are at home, you should have to be more dedicated towards your studies. Okay, limited sources के साथ में हमें ज़्यादा dedication देना है. So, when we are talking of studies, let us concentrate on what we are going to do today. Today we are going to start a new chapter of your English book, that is chapter number 6. This is Jody's Fawn. Now before you read, pay attention to this. Often instead of rushing to a doctor to treat a small cut or burn, we find quick and effective cures using things available at home. Can you think of some such home remedies for a cut on your knee, a burn on your arm, a bee sting? Now what happens sometimes, हमें अगर कोई कट लग गया है, कहीं पे छोटा मोटा कोई बर्न हो गया है, what we do? Instead of rushing to a doctor, हम लोग बहुत ही quick and effective cures जो होते हैं, हम उनसे फाइंड आउट करते हैं कुछ क्योर्स फ्रॉम दोज थिंग्स दैट आर अवेलेबल एट होम. एंड कैन यू थिंक ऑफ सम सच होम रेमेडीज? क्या आप कुछ और होम रेमेडीज सोच सकते हो? आपको यहाँ पे 3 चीजें दी हैं: अ कट ऑन योर नी, अ बर्न ऑन योर आर्म एंड अ बी स्टिंग. Now, in this story, what we are going to do is, in this story, Jody's father has been bitten by a rattlesnake. जो इस मेन कैरेक्टर जो है स्टोरी का नेम इज जॉडी. तो जॉडी के जो फादर है, he has been bitten by a rattlesnake. He quickly kills a doe and uses its heart and liver to draw out the poison. So what he do? Jody he quickly kills a doe and उसके heart and liver को वो use करता है to draw out the poison from the father. Jody wonder what will happen to the little fawn left without a mother. Now as they have bought the doe, they have killed the doe और उस डॉ के उन्होंने लिवर और हार्ट को यूज किया, बट उस डॉ का एक छोटा सा फॉन भी था. Now Jody was wondering what is going to happen with this little fawn who has been left without a mother. So this is all we are going to study in the story. Now starting with the part 1. Jody allowed his thoughts to drift back to the fawn. He could not keep it out of his mind. He had held it in his dreams in his arms. He slipped from the table and went to his father's bedside. Penny lay at rest. Penny was his father's name. His eyes were open and clear, but the pupils were still dark and dilated. Jody said, "How are you feeling, Pa?" "Just fine, son. Old Death has gone thieving elsewhere, but wasn't it a close shave?" "I agree," Penny said. "I am proud of you, boy, the way you kept your head and what was needed." Now Jody allowed his thoughts to drift back to the fawn. वो fawn के बारे में ही सोच रहा था. वो उसे अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था. He had held it. उसने उस फोन को पकड़ा था. He has his dreams. He held it in his arms. And now he slipped from his table. वो अपने फादर के बेड साइड पे गया. पेनी वहां पे आराम से सो रहे थे. पेनी was his father and his eyes were open and clear. बट जो प्यूपल्स थे ना उसके, इट वर स्टिल डार्क और वो बहुत डायलेटेड थे. दैट इज दे वर स्टिल एनलार्ज्ड. नाउ जॉडी सेड, जॉडी ने बोला, हाउ आर यू फीलिंग फादर? पा मीन्स फादर. His father said, just fine, son. Now old death has gone thieving elsewhere. मौत आई थी बट कहीं और चली गई. But wasn't it a close shave? But don't you think कि मैंने बहुत ही narrow escape किया है death से? I agree. He said, yes, I agree. And Penny said, I am proud of you, boy. His father said कि मैं बहुत proud हूँ तुम्हारे लिए. The way you stayed calm in this difficult situation and you did what was needed. So I am really proud of it. His father said. Pa, yes, son. Pa, do you really recollect the doe and the fawn? Now Jody says, father. He says, yes, son. He says, father, क्या आपको कुछ भी याद है about the doe and the fawn? Do you recollect the doe and the fawn? Now what does father says? Let us see. I can never forget them. The poor doe saved me. That's certain. Now father says, मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता. वो poor doe, उसी doe की वजह से ही तो मैं save हुआ हूँ. And that's certain. How can I forget them? पा द फोन मे बी आउट देयर येट. उसने बोला पा जो वो बेबी था उसका डो का जो फोन था वो अभी भी वहीं पे होगा. इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्कैर्ड. वो बहुत ही हंग्री होगा, बहुत ही डरा हुआ होगा, बिकॉज अब उसके पास उसकी मदर नहीं है. आई सपोज सो. फादर सेज यस, आई सपोज सो. ऐसा हो सकता है. पा आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क. He says, पा नाउ आई एम अ बिग बॉय एंड अब मुझे ड्रिंक मिल्क को ड्रिंक करने की, दूध पीने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज नाउ आई एम अ ग्रोन अप बॉय.
Why don't I go and see if I can find the phone? मैं क्यों नहीं जाके एक बार ये देख लूं कि अगर मुझे फोन मिल जाए तो, एंड ब्रिंग इट हेयर, उसे मैं यहाँ पे ले आऊं एंड रेज इट, और उसे यहाँ लाके पाल पोस के हम यहीं पे अपने पास बड़ा करें. पेनी ले क्वाइट, पेनी एकदम बेचारा शांत लेटा रहा, स्टेरिंग एट द सीलिंग, छत को देखते रहे. बॉय यू हैव गॉट मी हेप्ड. नाउ फादर सेज कि बॉय तुमने मुझे एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है जहां पे मैं नो भी नहीं कर सकता. It won't take much to raise it. Pa, it will soon start eating leaves and acorns. Now he says कि फादर उसको रेज करना, उसको बड़ा करना बहुत कुछ नहीं लेगा हमसे. वो बहुत जल्दी बड़ा होते ही वो लीव्स खानी स्टार्ट कर देगा एंड स्मॉल ब्राउन नट्स खाने शुरू कर देगा. सो वो हमारा बहुत मनी या बहुत जो हम बोलते हैं ना टाइम एंड केयर वो नहीं लेगा. सो व्हाई नॉट वी ब्रिंग इट हियर. यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज. नाउ फादर सेज कि तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम्हारी एज के जो बॉयज है ना, यू आर मच मोर स्मार्टर देन देम. एंड वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉजेंट टू ब्लेम. एंड वी टुक इट्स मदर, हमने उसकी मदर को उससे छीना है, एंड इट वॉजेंट टू ब्लेम, और इसमें ब्लेम करने वाली उसको कोई बात नहीं है. श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व. एंड श्योरली बिल्कुल सही बात है, ये बहुत ही अनग्रेटफुल है इफ वी लीव दैट फॉन टू स्टार्व अलोन. Son, I can't say no to you. I never thought I would live to see another day. Now father says that son, मैं तुम्हें no कह ही नहीं सकता because I have never thought कि अगर वो डो नहीं होती ना तो I would have lived to see the another day. ऐसी मेरी कंडीशन हो जाती. Can I ride back the mill wheel and see if I can find it? Now he says, can I ride back the mill wheel? और मैं देखूं अगर मुझे वो फोन मिल जाए. Tell your ma I said you can go. He sidled back to the table and sat down. His mother was pouring coffee for everyone. He said, Ma, Pa says I can go bring back the phone. She held the coffee pot in mid-air. What phone? The phone belonging to the doe we killed. We used the doe's liver to draw out the poison and save Pa, she gasped. Well, for pity's sake, Pa says it would be ungrateful to leave it to starve. Now he says, his father says कि अपनी mother को बता देना that I have permitted you to go to bring back the phone. Now he sidled back to the table and sat down. His mother was pouring coffee for everyone. And he said, Ma, Pa has given me the permission that I can go back and bring the phone. Now, listening this, mother का जो coffee pot था ना, it was held in the mid-air and mother said, what phone are you talking about? What phone? कौन सा phone? The phone, वो phone जो उस डो से belong करता था, जिसे हमने kill किया था, and जिस डो का liver हमने use किया था to draw out the poison from Pa and save Pa. She gasped. एक पल के लिए तो वो देखती रही. Well, for pity's sake, now he says, please माँ, for pity's sake, दया के खातिर ही कर लो ऐसा. Pa says it would be ungrateful अगर हम उस बेबी को बाहर स्टार्व होने के लिए, भूखा मरने के लिए अकेला छोड़ देंगे. Doc Wilson said, that's right, ma'am. Nothing in the world thus comes quite free. The boy's right and his daddy's right. Millville said, he can take bride back with me. I'll help him find it. She set down the pot helplessly. Well, if you will give it your milk, we have got nothing else to feed it. Now, Doc Wilson said, दैट्स राइट मैम. इस दुनिया में कोई भी चीज जो है ना वो फ्री नहीं आती. एंड बॉय इज राइट एंड हिज डैडी इज ऑल्सो राइट. सो मिलविल व्हाट डिड ही सेड दैट यस ही कैन राइड बैक विद मी एंड मैं उसे हेल्प कर दूंगा टू फाइंड आउट द फोन. शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली. उसने बहुत ही हेल्पलेसली उस पॉट को नीचे रखा एंड शी सेज, मदर सेड, ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम उसे अपना शेयर ऑफ मिल्क दे दोगे ना, देन वी बिकॉज वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट. Millville said, come on boy, we have got to get riding. Now Millville said, come on boy, now we have to get started riding and we have to find the phone. माँ Baxter asked anxiously. Now माँ Baxter जो थी उन्होंने बहुत ही anxiously पूछा, you will not be gone long, तो बहुत ज़्यादा देर तो नहीं लगा क्या होगे. Jody said, I'll be back before dinner for sure. Now he says, no mother, we won't take long. I'll be back home before dinner and this is for sure. Millville mounted his horse and pulled Jody up behind him. Now Millville, he mounted up the horse and उसने Jody को भी अपने पीछे बिठा लिया pull up करके. He said to Millville, now Jody ने Millville से कहा, Do you think the phone still there? Will you help me find him? He says क्या आपको लगता है फोन अभी भी वहाँ होगा? आप मेरी हेल्प करोगे फोन को ढूंढने में? Now Jody asked who? Jody ने किससे पूछा? Millville से पूछा. We'll find him if he is alive. How do you know it's he?
The spots were all in a line, one on a doe fawn. Pa says the spots are every inch way. Now he says कि हाँ अगर वो जिंदा होगा तो हम उसे फाइंड कर लेंगे, बट तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये वही फोन है? He says कि वो एक ऐसा फॉन था जिसके ऊपर जो स्पॉट्स थे ना वो सारे लाइन में थे. ओके, बट पास सेज दैट ऑन अ डो फॉन स्पॉट्स जो होते हैं ना दे आर एवरी विच वे, मतलब इन ऑल डिफरेंट डायरेक्शंस. बट उस फॉन के ऊपर जो स्पॉट्स थे ना दे वर इन अ लाइन. सो इट इज एबल टू आइडेंटिफाई, मैं पहचान लूंगा कि यही वो फॉन है जिसे मुझे लेके जाना है. Now, see, part 2, Jody gave himself over to thought of the fawn. They passed the abandoned clearing. He said, cut to the north, Millville. It was up here that Pa got bitten by the snake and killed the dawn, and I saw the fawn. Now, Jody gave himself over to the thoughts of fawn. उसने एक बार ये जो था वो fawn के thoughts जो थे उसके दिमाग में चल रहे थे. He gave himself over it and वो वहां से वो abandoned सी clearing थी वहां से वो pass on किए. एंड उसने ही सेड मिलविल नॉर्थ की तरफ कट करो बिकॉज इट वॉज दिस प्लेस जहां पे फादर को स्नेक ने कट किया था, बाइट किया था, एंड यहीं पे हमने उस डो को किल किया था, एंड इट इज द प्लेस वेयर आई सॉ दी फॉन. सडनली जॉडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विद हिम. सडनली जॉडी बिल्कुल अनविलिंग था, मिलविल को अपने साथ नहीं रखना चाहता था. इफ द फॉन वॉज डेड और कुड नॉट बी फाउंड ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन. नाउ ही सेज कि अगर फोन डेड हुआ या हम नहीं ढूंढ पाए, सो आई वोंट बी एबल टू हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन. एंड इफ द फोन वाज देयर द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट. एंड ही सेज, एंड अगर फोन यहाँ पे हुआ तो मीटिंग इतनी लवली होगी, इतनी सीक्रेट होगी ना, दैट मैं एंड्योर नहीं कर सकता टू शेयर दिस ब्यूटीफुल सीक्रेट मीटिंग विद एनीवन. ही सेड, इट्स नॉट फार नाउ बट द स्क्रब्स इज वेरी थिक फॉर अ हॉर्स, आई कैन मेक इट ऑन फुट. नाउ जॉडी सेज, अब ज्यादा दूर नहीं है और जो ये स्क्रब्स है ना ये भी बहुत थिक है फॉर अ हॉर्स, और अब मैं पैदल पैदल यहाँ से चला जाऊंगा. इट्स नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, बट आई एम अफ्रेड to leave you, boy. Suppose you got lost or got bitten by the snake too. I'll take care. It might take me a long time to find the fawn if he's wandered. Leave me off right here, all right. But you take it easy now. You know north here and east, there and there. That tall pine makes a bearing so long. So long, Millville, I am obliged. Now he says, बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू अलोन ओवर हेयर बॉय. सपोज तुम यहाँ पे खो गए या सपोज तुम्हें भी स्नेक ने अगर बाइट कर लिया तो. नाउ जॉडी सेज, डू नॉट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ इट. मैं ध्यान रखूंगा कि मुझे ज्यादा देर भी लग सकती है टू फाइंड द फोन, एंड इफ ही इज वॉन्डर्ड लीव मी ऑफ राइट हेयर, मुझे यहीं पे छोड़ दो. ही सेड, ऑल राइट, बट टेक इट, बट यू टेक इट इजी नाउ. अब इजी लो इस चीज को. यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट, आसानी से जाना, कोई पैनिक मत करना, परेशान मत होना. तुम्हें पता है नॉर्थ इधर है, ईस्ट इधर है, देयर एंड देयर इधर और उधर. ये जो टॉल पाइन है इट मेक्स अ बियरिंग. ये जो टॉल पाइन है इट मेक्स अ बियरिंग मींस एक्ट्स एज अ कंपास एंड हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन. ये कंपास की तरह एक्ट कर रहा है ये टॉल पाइन ट्री, और इसी टॉल पाइन ट्री से तुम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई कर सको. So long, he said, so long, Millville, I am obliged. He says, so long, Millville, I am highly obliged to you. He waited for the sound of the hoofs to end, then cut to the right. उसने वो horse hoofs की जो sound थी, उसके लिए wait किया कि वो end हो जाए, then he cut to the right. The scrubs was still. Scrubs जो थे वो बिल्कुल still थे. ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस. बिल्कुल साइलेंस था, लेकिन जब वो सूखी लकड़ियों के ट्विग्स के ऊपर से मूव कर रहा था ना, तो उनकी जो क्रैकलिंग जो साउंड्स थी ना, बस अक्रॉस द साइलेंस वही साउंड आ रही थी. He wondered for an instant if he had mistaken his direction. वो एक पल के लिए तो, एक इंस्टेंट के लिए तो बहुत वंडर्ड हुआ कि उसने शायद सारी डायरेक्शंस को मिस्टेक कर दिया, भूल गया, उसने मिक्सअप कर दिया सबको. Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. He came into the clearing under the oaks. Buzzards sit in a circle around the carcass of the doe. They turned their head on their long scrawny necks and hissed at him. He threw his bows at him and they flew into an adjacent tree. The sand showed large cat prints, but the big cat killed fresh and they had left the doe to the carrion bird. Now he says, then a buzzard rose in front of him and उसने flap किए अपने wings को in the air. And he came into the clearing under the oaks.
बजार्ड जो था इट सैट इन अ सर्कल अराउंड द कैराकस ऑफ द डो, उस डो को खाने के लिए सारे बजार्ड्स जो थे, बजार्ड्स क्या होते हैं, वल्चर जैसे लार्ज बर्ड्स होते हैं जो खाते हैं डेड एनिमल्स की फ्लैश। तो वहां पे एक वो डेड डो पड़ी थी तो वो उसको वहां पे खा रहे थे। दे टर्न्ड देयर हेड ऑन देयर लॉन्ग स्क्वानी नेक्स, बड़ी बड़ी उनकी नेक्स थी, एंड हिज डेट हिम, और उसके ऊपर उन्होंने हिस किया, एंड ही थ्रू हिज बो एट देम एंड दे फ्लू इनटू एन एडजेसेंट ट्री, और उसने अपना एक बो जो था वहां पे फेंका, शूट किया, उधर की तरफ थ्रो किया, एंड वो जितने भी वो बजार्ड्स थे ना वो सारे वहां से फ्लू करके पास में ही एक ट्री था वहां बैठ गए। वहां पे जो सैंड था इट शोज लार्ज कैट प्रिंट्स, बिल्ली के पंजों की लार्ज लार्ज फीट्स दिख रहे थे, बट कैट्स किल्ड फ्रेश, बट जो बिग कैट्स होती हैं वो फ्रेश किल करती हैं, एंड दे हैड लेफ्ट द डो टू द कैरियन बर्ड्स, और वो कैरियन बर्ड्स के लिए ये पूरा का पूरा जो है डो छोड़ के चले गए। He parted the grass at the place where he had seen the fawn. Now he parted the grass at the place जहाँ पे उन्होंने इस fawn को देखा था. It did not seem possible that it was only yesterday. ये ऐसा possible नहीं लग रहा था, ये सिर्फ yesterday की बात है. The fawn was not there. He circled the clearing. Fawn वहाँ नहीं था. उन्होंने circle को clear किया. There was no sound, no sign. कोई sound नहीं, कोई sign नहीं. The buzzard clacked their wings. वो buzzards जो थे वो अपने wings को continuously फड़फड़ा रहे थे, ठीक है, clack कर रहे थे. Impatient to return to their business. अब वो impatient थे वापस उसी अपने business पे return करने के लिए. What was their business? To eat the flesh of the dead doe. He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours. अब now he returned to the spot जहाँ पे fawn जो था ना वो emerge हुआ था and drop हुआ था on all fours, that is on all four legs, studying the sand for the small hoof print. और उस मिट्टी में उस fawn के जो पंजों के निशान थे ना उनको स्टडी करता करता द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर्ड्स. बट हुआ क्या, रात में बारिश आई थी, उससे सारे के सारे जो ट्रैक्स थे ना दे ऑल वर वॉश्ड अवे, सिर्फ वहां पे कैट और बजार्ड के ही फुटप्रिंट्स दिखाई दे रहे थे. नाउ यहां तक हमें क्या पता चला, दैट ही वॉज डाई हार्टली फॉन्टिंग कि उसे डॉन फॉन मिल जाए, बट टिल दिस टाइम ही इज नॉट एबल टू फाइंड दी फॉन. नाउ उसे फॉन कैसे मिलता है, वो कैसे उसको आइडेंटिफाई करता है, कैसे अपने साथ लेके जाता है, दिस वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट पार्ट. In today's class, we have to do only these two parts that we have done. I hope they are well explained and you just go through it and you will be able to understand it more nicely. And tomorrow's class will be completing this chapter, doing its third part. Okay? Till then, just take care of yourself, stay home, stay safe and keep studying.